हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निता, योर एजुकेटर। और आज हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सप्लाई। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेके कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को जब भी चाहें वो पढ़ सकते हैं, ओके, इन डिटेल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ओके। So I'm going to share it on the screen. Determinants means the factors that can affect the supply. That means that can change the supply. क्या ऐसी चीजें हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं आपकी सप्लाई को? दैट इज प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड एवरी टाइम व्हेनेवर से आई से हियर कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा? हमेशा प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, ओके। हमेशा ये आपको दिमाग में रखना है कि एज यू हैव टू believe or you have to assume yourself as a supplier or a manufacturer, okay। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम बात करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम वो क्या चाहेगा इफ द प्राइस इंक्रीजेस। तो ऑब्वियस सी बात है, ही इज देयर टू अर्न द प्रॉफिट, मेन मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, सो ही इज गोइंग टू सप्लाई मोर। और जैसे ही प्राइसेस आपके कम होंगे, ही इज गोइंग टू डिक्रीज द supply of the product. So determinants of supply or individual supply, the factors will result in a change in supply of the commodity. Okay, so these are basically the factors, determinants or factors. Now let's study here. The first is they are very important. Okay, इसमें किसी भी तरह का एमसीक्यू भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आंसर आ सकता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, इट मींस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो सिंपल यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा? एज द प्राइस इंक्रीजेस, ओके, द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिमांड में क्या था, उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे होगा सप्लाई में। डिमांड में क्या था? एज द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ओके। तो उसका क्या था? आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये हम आगे में पढ़ें, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। सो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस। तो बेसिकली प्राइस का ही मेन यहाँ पे खेल है। As a general rule, price of the commodity and its supply are directly related. It means it has a direct relationship. It means as price increases, the quantity supplied of the given commodity also rises and vice versa. Same thing I have told you. It happens because at higher prices, there are greater chances of making a profit. So main motive is to earn the profit, and as the price is going to increase, then the supply is also going to increase, okay? It induces the firm to offer more for sale in the market. So here the supply is a function and of price, and it can be expressed as S is equals to small f in bracket P. ये इस तरह इसको supply function denote करते हैं, right? The direct relationship between the price and supply is known as the law of supply. Direct relationship, indirect ये आपका inverse relationship था of demand, that is known as the law of demand. And here you have the direct relationship. तो अगर आप डिमांड को दिमाग में रखेंगे तो उसका जस्ट ऑपोजिट आपका सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये आपका प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर टर्म्ड एज अदर फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल जो आपका आता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। उसके खुद की कमोडिटी के प्राइस क्या है, ठीक है। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स यानी कि उसके साथ जो अलग कमोडिटीज होती हैं। देन एज अ रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। यानी कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज क्या हो सकते हैं? An increase in the prices of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. As a result, the firm shifts its limited resources from the production of the given commodity to the production of other goods. Okay, for example, if I say here, एक फार्मर है, वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पे बताया गया है, ओके। और जैसे ही राइस में प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, as there is an increase in the price of the rice or you can say the millets or anything sugar, okay, for example, then what happens here? The producer will switch from wheat to sugar or rice, whichever the price is high. The supply of that was going to increase because he is getting more profit from that commodity. तो क्या होगा? जो प्राइस ऑफ द अदर गुड्स होते हैं, हम उसकी तरफ स्विच कर रहे हैं। हम का मतलब यहाँ पे क्या? प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, राइट। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वही दी गई है, prices of the factors of production or inputs, okay। Now factors of production क्या होते हैं? Land, labor, capital, enterprise, okay। So they all are related to each other and they are in the process of production, okay। हर चीज को process of production में ये help करते हैं। So price of the factors of production or inputs like labor, capital, raw material, etc. used in the process of production constitute the cost of production of the commodity। यानी कि जो हम पे करते हैं अमाउंट, प्राइस,
वो इन सब चीजों को मिलके ही हमें पे करना होता है ना, अलग से तो वो सप्लायर लेगा नहीं हमसे, वो इकट्ठा इन सब चीजों से लेगा, राइट? सो इफ द प्राइस ऑफ ऑल और एनी ऑफ दीज फैक्टर्स और इनपुट इंक्रीज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो वो यही कहता है ना कि अरे आई हैव, प्राइस क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फार्मर है, जो लेबरर है, जो वेजेस उसको पे कर रहा है, ओके, जो उसमें कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल लाने में जो ट्रांसपोर्ट करा है, वो सब क्या होता है आपका? इट इज दीज आर द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। सो जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज करेगा, then the price of the supply of the commodity also increases. Okay, so if the price of all or any of these factors or input increases, the cost of production also increases. Okay, and vice versa, because जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? इन सब चीजों पे वो ज्यादा पैसा लगा रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, एज अ रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड, जहां पे उसको प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स उसको बनाने में उसको कम पैसा देना पड़ रहा होगा, ही विल स्टार्ट, यू कैन से द प्रोडक्शन उस चीज का वो ज्यादा करना शुरू कर देगा उस कमोडिटी का, एंड देन ही कैन अर्न द प्रॉफिट। ओके, so, for example, here the example you can read it by yourself. The state of technology. Of course, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होगी, ओके, या इम्प्रूव्ड होगी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हमेशा रिड्यूस कर जाएगा, राइट? एंड विच रेजेस द प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एंड देन अगेन the sale or the supply will increase. Okay, it induces the seller to increase the supply. However, technological degradation or complex and outdated technology will increase the cost of production. For example, चाइना में देख ली क्या है आपका टेक्नोलॉजी, एडवांस एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। सो वी ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर, हम हमेशा बाहर का ही प्रोडक्ट्स जो है ले लेते हैं, इंपोर्ट्स कर लेते हैं, ओके, रादर जस्ट परचेजिंग इट फ्रॉम आवर ओन कंट्री, बिकॉज देयर प्राइस आपके जो है वो प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस वालों के लिए भी, मैन्युफैक्चरर्स लोग के लिए भी, एंड अगेन द प्रोडक्ट इज टोटली डिफरेंट। ओके, तो क्या होता है टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन जहां पे होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इफ यू आर गोइंग टू यूज, ओके, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट विल लीड टू अ डिक्रीज इन सप्लाई। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, इफ सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल डिस्करेज द प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई द कमोडिटी। एंड इफ सपोज उसने सब्सिडीज दे दी, टैक्स कंसेशंस दे दिए, देन वो सप्लायर हमेशा चाहेगा उसी चीज का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ दैट commodity in which he is getting more tax concessions or subsidies by the government, getting the support of the government, so he can easily just make it profitable. Okay, then goals or objectives of the firm. The main motive or the goal of any of the firm or the supplier or manufacturer is to earn the profit. Okay. However, with the change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profit. Why? In this case, the manufacturer has the other target or the objective is to capture the market. Okay. For example, जियो का ले लिए, पहले वो जियो ने क्या किया, आपको बहुत ही कम पैसों में रिचार्ज किया या जीरो पे आपने कर दिया, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिम कार्ड्स प्रोवाइड करे, राइट? बट एज ही कैप्चर्स द होल मार्केट, जियो ने जब पूरी मार्केट कर ली, देन इट स्टार्ट रेजिंग इट्स प्राइसेस। सो दैट्स अ goal of the producer to earn the you can say the profit, to make more profits, okay, from the from by supplying the commodity. एंड सेकेंड, अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है तो क्या होगा? इज टू कैप्चर द एक्सटेंसिव मार्केट्स। ओके, कैन बी देयर। नाउ हियर वी हैव चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। सिंपली इसको बस समझ लेना इतना सा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड तब होगा जब उसके खुद के प्राइसेस में चेंज आ रहा होगा, और चेंज इन सप्लाई अदर फैक्टर्स, ओके, जो हमने भी पढ़े हैं। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, whenever supply for the given commodity changes to a change in its own price, then such change in supply is known as change in quantity supplied. Okay, देन चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है? उसके खुद के प्राइस में चेंज नहीं है, बट ड्यू टू ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके, whenever supply for the given commodity changes due to other factors other than price, then such change in supply is known as the changes in supply. Okay, now here you can say just go through it. The market price of almond rises, thus the quantity supplied of almond also increases. So it's a example of what is example of change in quantity supplied. Okay, because खुद के prices में change हो रहा है. The price of oranges decreases so as the annual production of grape increases. तो दो commodities हो गई, यानी कि change of the other commodity, so it will be going to be a change in supply. Then automobile workers get a 5% wage increase, and so the production of automobiles decreases. So it's going to be what? Change in supply. ठीक है, अदर फैक्टर्स हैं,
Due to a fall in the price of paper, the production of paper decreases. That is a change in quantity supplied. Okay, I hope it's clear now. Now next is determinants of market supply. Market supply को क्या determine करते हैं? That is number of firms in the market. जितनी आपकी markets में firm होंगी उतना ही production increase करेगा and vice versa. Okay. Then future expectation regarding price. If the seller expects a rise in price in future, then the current supply he will decrease it. ताकि उसको रोक देगा ताकि जैसे ही प्राइस उसके बढ़ेंगे उस प्रोडक्ट के then he's going to make the supply. Okay. And similarly if the prices will fall, उसने प्रिडिक्ट कर लिया कि एक्सपेक्ट कर लिया कि प्राइसेस कम हो जाएंगे अभी फ्यूचर में, then he will start keep on supplying the goods in the market. Okay, just to get the profit, maximum profit वो earn करना चाहेगा, right? Now means of transportation and communication, जहाँ पे transportation and communication बहुत अच्छा होगा, okay, then there is an improvement in the means of transportation and communication. It will helps in maintaining an adequate supply of the commodity. Okay, तो आसानी से आप सामान जो है स्टोरेज और गोडाउन से लाके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, so it will help. तो इससे भी सप्लाई इफेक्ट करता है. So these are the determinants of market supply here. Okay, the first one is the individual supply. ये individual supply थे आपके थे यहाँ पे, right? 1 2 6. Okay, and number of firms in the market ये क्या है? Following are the market supply की, ठीक है? Individual supply, market supply I've already told you in the previous video. Okay, I hope you understand that. Now in the next video we are going to study here supply function. Okay, so I hope you like the session here, the explanation, and please do tell me in the comments